Hello dear students, welcome you all for this video lecture. In this video lecture, we have discussed the most important one of your tissue. In the previous classes, we have discussed about what is connective tissue and what is the classification of connective tissue. Generally, the connective tissue is divided into two parts, that is connective tissue proper, next skeletal tissue, and one is the fluid connective tissue. Next, again the connective tissue proper is subdivided into different categories and we have discussed one by one from the connective tissue proper. Connective tissue proper ame gote one by one ame dekhiba. The first one of the connective tissue is the areolar tissue. First joda thila amar connective tissue ro seita hasla amar areolar tissue. So we have discussed now in this video about what is areolar tissue, in which part of our body they are viewed or their occurrence, next to what is the function and how they are look like, we have discussed in this video. Okay, so due to it is a connective tissue, connective, that means I have already told you and I again repeated that it can connect to all of our body. ये आमर कौन करछे विभिन्न बॉडी पार्ट्स मानु की आमर कनेक्ट कर रखबार सहाय्य करूची सेति पय बोली के एथि को हमें एटा को हमें कनेक्टिव टिश्यू बोली कहउछे. एई जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट मींस दीज आर द एग्जैक्ट टिश्यू और दीज आर दिस टिश्यू बाय व्हिच दे आर कनेक्ट टू आवर बॉडी पार्ट्स. The first one is the connective tissue proper is the areolar tissue. Okay, we have discussed about the areolar tissue. कौन कहले देखो पहले areolar tissue. It is a loose connective tissue. It is a first कौन कहला? It is a loose connective tissue. So what do you mean by loose? That means the cells are not tightly packed together like epithelial tissue. Epithelial tissue भलिया ए माने पूरा से माने एड्ज लागि थिले epithelial tissue रे, but in this tissue they are widely spread and they have the more intercellular space in between the two cells. Okay, so बर्तमान कौन कहला, it is a one loose connective tissue. That means the cells are not properly tightly packed to each other. They have stay randomly or freely. तो कौन कहला areolar tissue? It is a loose connective tissue. Next point, it is widely distributed. एटा कौन हिछि हमरो widely distribute हेकि रहिछि. Widely माने कौन, एटा पूरा हम शरीर रो चारियाडे जो ह्यूमन बॉडी रो जो ऑर्गेनिज्म मानकर पूरा टोटल बॉडी चारियाडे स्प्रेड हेकि रहिछि. तो सेति पय बोले एटा कोन बोले कहा जे इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. भलसे बुझ पिला माने गोटे गोटे आमे डिस्कशन करि जिबा ईच एंड एवरी पॉइंट्स को तमे इजीली भलसे मन रखियो चेष्टा करो हला ने, बिकॉज़ दीज आर द इंपोर्टेंट थिंग्स, दीज आर कम्स इन योर every competitive examination, in medical entrance examination and some other examinations. So it is the important thing, so you have listen properly. So it is a loose connective tissue because the cells are not bound tightly. Next asla, they are widely distributed throughout the body. Next point, the function as a packing material between organs. Due to the different organs are present in the different parts of our body. विभिन्न प्रकार organ जाका हमर विभिन्न parts of our body रे अछन, विभिन्न position रे रहि अछन. जो different position मानो को जो गोटे मनकर भाव हमर रहिला हार्ट, तातळ किडनी बा लंग्स, ए जो different organ जाका different place रे अछन, different position रे अछन हम बॉडी रो, ए मानो को जे कनेक्ट करी रखिबारे सहाय्य करे ताकू आमे कोन बोली कहउछे कनेक्टिव टिश्यू. बा जोटा कि सेल सेल मानक मध्य थिबा गैप टाको फिल अप करे सेटा को हमें पैकिंग मटेरियल बोली मध्य कहउथले. सो आर फंक्शन हला फंक्शन एज ए पैकिंग मटेरियल बिटवीन ऑर्गन्स. एटा कोन काम करछ हमर ऑर्गन मानक भितरे जो गैप टा रहउची बा जो डिस्टेंस टा रहउची सेटा को ए जो कनेक्टिव टिश्यू रो हमर रहिला जो एरियोलर टिश्यू टा कनेक्ट करी रखिबारे सहाय्य करूची. तो कौन कहला, इट्स फंक्शन एज ए पैकिंग मटेरियल बिटवीन ऑर्गन्स. व्हाट, तो एटा तुम फंक्शन रे मध्ये लिखि परिबो हला ना, हेडिंग देके अलग सेपरेट हेडिंग देके मध्ये तुम एटा कर लिख परिबो. तो कौन कहला फंक्शन, इट इज एक्ट एज ए पैकिंग मटेरियल बिटवीन द ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आल्सो. नेक्स्ट पॉइंट, it is composed of
फोर टाइप ऑफ सेल्स एटा केतरा टाइप ऑफ सेल रे तयारी हिची चारि प्रकार सेल्स बिकॉज टिश्यू रो डेफिनेशन कोन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू तो एठी देखो it is composed of four type of cell एटा चारिटा टाइप्स और माने फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रे तयारी हिची एवं टू टाइप ऑफ फाइब्रोस एंड दुई प्रकार कोन अछि फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू बा फाइब्रोस टिश्यू रही अछि जोटा कोन कहला मेनली द एरियोलार टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ एरियोलार टिश्यू ता तयारी होई अछि कि भलिया बाय फोर टाइप ऑफ सेल चारि प्रकार ऑफ सेल एवं एंड टू टाइप ऑफ फाइब्रोस सो सर व्हाट डू मीन बाय फाइब्रोस फाइब्रोस इज नथिंग बट ओडिया रे हमें तंतु जातीय बोली कहूचे जोटा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थियो सूता भलिया जोटा स्ट्रक्चर थियो थ्रेड माने बुझ पतो ना सूता भलिया जो जाक थियो तमे मध्ये ए प्रकार टिश्यू देखि पाथियो व्हेन माने मु तो बुझिया पाए बोली गुड एग्जांपल दोची व्हेन वी कैन ईट द चिकन्स देखियो हमें चिकन जतो खाउचे सेतो सेथिरो जो हमर जो पीस टा हमें खाउचे जो एनी पार्ट्स और द लेग पीस तो सही समय जतो हमें खाउचे सेथिर देखियो थ्रेड भलिया फाइब्रोस थ्रेड भलिया कोन अछि पीसेस आसे सेटा को हमें फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू बोली कहते त माने टिके आईडिया करियो बोले मते जानि दे परियो छाड़ फाइब्रोस माने कोन कहिला जे इट इज ए वन टाइप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड भलिया सफ्टेन जागा तो चारि प्रकार सेल रहिला एवं दुई प्रकार कोन रहिला फाइब्रोस टिश्यू रहिला काहे एरियोलार टिश्यू रे दैट मींस these four type of cells and two type of fibrous connective tissue is composed of areolar tissue ए जो छ जण मिसी के एरियोलार टिश्यू तयारी करछंती ओके तो देखो ए जो चारि प्रकार टिश्यू कोन कोन दुई प्रकार फाइब्रोस कोन कोन हम देखिबा बे the four types of cells are लिख देली तुम लिखि परियो the four type of cells are एक आसला फिब्रोब्लास्ट मन रखो one is the fibroblast next one is the histocytes मु सेपड़ कंटिन्यू कर दोची एठरो काहे कि the fibroblast the second one is the histocytes okay the second one टा रहिला जोटा रहिला हमर सेटा रहउची histocytes third one is the mast cell fourth one is the lymphoid or lymphocytes that means these are mainly present in our lymphatic system like legs बोली भाग मन रखते हला ने ए जो पॉइंट्स हमर कोन छै हम जेतले पढिबा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से समय रे हम ए सब लिम्फ ग्लैंड लिम्फ नोड सब विषय डिस्कशन करिया बट एबे जनरली मन रखि दियो ए जो लेग्स पोजीशन ता बोली हमर हला तो कोन कहला सेल्स the four type of cells which is composed of the areolar tissue or the in the areolar tissue the four type of cells which are found these are one is the fibroblast next one is the histocytes study of tissue is known as histology so से अनुसार हमर एटा कोन होचे जो विभिन्न प्रकार सेल मान अछन ताको हिस्टोसाइट्स बोली कहा जाय नेक्स्ट असली मास्ट सेल एंड सम ऑफ द lymphoid or lymphocyte cells these are the four type of cells which can make the areolar tissue and another two type of fibrous tissue is present or the fibrous connective tissue also present these two type of fibrous tissue are white collagen fibers and yellow elastic fibers mainly these are mainly found in your skull when we can study about the brain or the different sense organs हमें जतले कि ब्रेन पढिबा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक हमें जतले पढिबा से समय रे देखियो जो व्हाइट फाइब्रस येलो इलास्टिक फाइबर्स एई सब सेल मानन करे विभिन्न प्रकार हमर ऑर्गन्स माने ब्रेन मानकर कवरिंग जाको ब्रेन रो कवरिंग टा आई रो कवरिंग ईयर रो किछि पार्ट्स ए सब जाकर तयारी होइछन ओके तो सेतोळ तुम आईडिया करियो जे हां सर हमें टिश्यू रे बा एरियोलार टिश्यू रे हमें एटा पढिथिले बुझि पाछ नै सेति पय बोली कि ए सब जिंस मन रख तो कौन कहला ये जो एरियोलार टिश्यू रे चारि प्रकार सेल्स रहिला गोटे रहिला फिब्रोब्लास्ट आउट असला हिस्टोसाइट्स मास्ट सेल lymphoid cell and lymphocytes the two type of fibroblast or the fibrous connective tissue are white collagen fiber because they are slight whitish in color next one is the yellow elastic fiber these are they have the property of elasticity that means the stretching जेतो मन टिके स्ट्रेच होचंदी सेति पय बोली रहू इलास्टिक फाइबर्स बोली मध्ये हमें कहूचे तो देखो बिले एटा गला चारिटा टाइप्स रा हमर सेल एटा गला दुईटा टाइप्स रा हमर फाइब्रोस तो ए जो हमर जो कहितला कोन जे मेनली द एरियोलार टिश्यू इज मेड अप ऑफ four type of cells these are fibroblasts histocytes mast cell and the lymphoid and the two type of fibrous connective tissue or the fibrous tissue these are the white collagen fibers and yellow elastic
fibers. So these are the composition of areolar tissue. एटा गला तमरो composition of areolar tissue. Next कोन कहला এই जो टिश्यू माने कोन करंती जनरली सर एमान काम कोन हम देहरे इट हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू दैट मींस इट विल बी हेल्प इन द हीलिंग माने किछि जदी घा हे छै वुंड माने कोन घा हला ने जदि हमर कोठी जदि किछि घा हे छै डैमेज हे छै से सेल साइट डैमेज होछि ए माने ही से जो फाइब्रो हमर जो एरियोला टिश्यू ही से जगह को हमर कोन करछि फिलअप करिवार सहायता करछि एवं इफ in our day-to-day life number of cells will be destroyed and that cell will be reappear also by the help of areolar tissues. तो एटा कोन कहला it help in the healing of wounds मानु घा मानु को छाड़ीबारे बा सुखेबार सहायता करे बा से जगहटा को फिल अप करिवार सहायता करे growth and repair of the tissue that means if any parts of our body will be cut down and that particular muscles will be released from the body and that place will be also filled by the areolar tissue. ए जो सेल मानन को द्वारा ही से जो जगहटा हमरो फिल अप हे तो एटा कोन करछ हमर किछि ग्रोथ करिवारे किछि रिपेयर करिवारे रिपेयर व्हाट डू यू मीन बाय रिपेयर if any cells will be damaged or if any cells will be attacked by the any pathogens they will be destroyed that cell they will be again repair that cell से जो सेल को माने पुणी थरे रिपेयर करिवारे macrophages. Macrophages that means macro सब बेले मन रखो जो टॉपिक रे भी तमर macro आसला माने बड़ माइक्रो माने हला छोटो macrophages जेहेतु इटा स्लाइटली बिगर स्लाइटली ता अर्थ न जे विराट बड़ हला ने जो डिफरेंट सेल्स अछि as compared to different cells they are slightly larger so that they are called as macrophages. तो इटा कोन आइला macrophages are irregular shaped cells having phagocytic in nature. ए जो रहिला हमरो mast cell जोटा रहउछि बा macrophages cells जो जा रहउछि ए जो cells आगर these are irregular that means they have no definite structure से मानकर किछि गुटे definite structure नाही सेति में बोली कोन कहला हम सेरा को irregular बोली कहले तो कोन कहला macrophages are irregular shaped से मानकर गुटे definite structure नाही like amoeba cell ता देखछा ना से गो टाइम टू टाइम तार कोन करते शेप एंड साइज ता चेंज करी जाउछि शेप ता चेंज करी जाउछि से भलिया एमाने मध्य हमर सेल मानकर किछु डेफिनेट स्ट्रक्चर नाही ए जो मैक्रोफेजेस मानकर बट दे विल बी हेल्पफुल टू अस by the process they are doing that is the phagocytic in nature एमाने कोन कहिले हमर the macrophages are phagocytic. What do you mean by phagocytic or phagocytosis? The process by which the cells which can do the phagocytic they are known as the process is known as phagocytosis. माने जो सेल जाको ए प्रकार काम करंती से जो काम करिवा प्रोसेस टा हमें phagocytosis बोली कहबा. So sir phagocytic बा phagocytosis माने कोन जनरली when any pathogen माने बुझ पातो ना रोग करूथबा भूताणु बा जीवाणु हला ने जो माने के हम कोन करंती हम देहरे डिजीज करंती बा हमर केछि क्षति करंती से मानु हमें पैथोजेन्स बोली कहबा. When any pathogen will be enter in our body हम बॉडी रे जतोले किछि पैथोजेन पसि जाउची then in our body these cells can engulf them. These cells can engulf माने कोन गिली दबा से माने मन कर एटा गुटे भाबो let this is a pathogen and this is the macrophage cell. When these pathogens will enter into that particular position they will be engulf them एमाने से मानो कोन कर देले engulf कर देले गिरी देले and they can destroy them एवं से माने ताको कोन कर देले destroy कर देले. But if the number of pathogen will be enter in our body at a time or they can produce they will be not the macrophages will not kill them or they do not do the phagocytosis then we have suffering from the different type of diseases. जेतोले बहुत गुडा माक्रो पैथोजेन जाका हम देहरे पसि जिवे हम देहरे थिबा एंटीबॉडी बा मैक्रोफेजेस ए सेल जाका समान किल करि परिबेनी समान हम देहरे रोग करिवारे सहायता करिवे. किंतु फास्ट जेतोले आसंती ए जे हम देहरे इम्यूनो सिस्टम हम पढिबा इम्यूनिटी एंटीजन कोन एंटीबॉडी जोटा हम देहरे प्रोड्यूस होची अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेन समान तांको अगेंस्ट फाइट करंती ए सुजा तमे जेतोले के हायर क्लास को जिवो से समय हम ए विषय मध्ये डिस्कशन करिवा. तो एबे खाली मन रखो phagocytic माने कोन इट इज द one type of process. Phagocytosis माने कोन it is the one type of process by which when any disease causing pathogen will be enter in our body the macrophages can engulf them समान ता कोन कर दियंती गिली दियंती engulf माने गिली दियंती हला नै and engulf them and they can destroy them. This process is known as
mitosis, and the process which will be do by the cell, they are phagocytic in nature. এই যে প্রসেসটা যে সেল মানে করନ୍ତି সেটাকে আমি phagocytic cell বলি কହୁଛେ। তো ଏହା দেহ ভিতরে থিবা এরিওলার টিস্যু ভিতরে থিবা ଆମର macrophages যাକ কোন କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆଉଟସାଇଡ ର ପାଥୋଜେନ ଆମକୁ ଆଟାକ करे ସେମାନେ ତାକୁ କିଲ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ phagocytic in nature। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ phagocytic in nature ବୋଲି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ they destroy the dead cell and bacteria। ଏମାନେ ଆହୁରି କଣ କରନ୍ତି ଆମ ଦେହର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରି ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରନ୍ତି? ଡେଡ୍ ସେଲ୍। କିଛି ଯଦି ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସ ଅଛି ମାନେ the cells which are not properly function and they are already dead, these are released from this areolar tissue। एमाने कोन करନ୍ତି से जगह रो सीधा डेड सेल टा बाहर कर दियंती एवं सेठी गोटे नुआ सेल मध्ये प्रोडक्शन करिया सहाय्य करନ୍ତି and they will be also destroy the bacteria जोटा कि phagocytic in nature। म तुमको ऑलरेडी कहि छालिनी किछि बैक्टीरिया भाइरस जतो कि हम देहरे पसि गेले एमाने ताको डिस्ट्रॉय करिवारे मध्ये सहाय्य करନ୍ତି। नेक्स्ट mast cell are the small in size and roughly spherical in shape। macrophages जाक कोन थिला? irregular थिला। तापर नेक्स्ट आसला हमर mast cell। ए जो mast cell आसला नेक्स्ट हला ए जो mast cell कोन कहला? mast cell are small। ए माने देखियो टिके छोट हला small in size रे समान छोट and roughly spherical। roughly that means their outside एमानकर जो आउटसाइड ता हमर कोन हितो जनरली रफ भलिया थियो। दैट मींस दे आर नॉट इन दी प्रॉपर प्लेन नथियो समान किछि खदड़ बोली के हम जो कहूचे खदड़ वाटा उड एयर यूज करते माने समानकर स्मूथ लागियो नाही आउटर सरफेस ता सब रफ हे कि थिबो। तो कोन कहला? द mast cell are small in size and roughly spherical in shape। समानकर आउटसाइड ता रफ हेथिबो and they are look like spherical in shape। एमान देखियो हमरा spherical shape भलिया देखियो। नेक्स्ट असला they secrete। who are secrete? The mast cells। okay, the mast cells are secrete heparin। एमाने कोन सिक्रेशन करନ୍ତି? this is the most important one पढिबो तमरो परीक्षा रे मध्ये the which cell secrete heparin। को सेल हमर हेपारिन सिक्रेशन करिवार सहाय्य करती? लिखियो mast cell। mast cell help in secretion of heparin। they are secrete heparin serotonin। एमाने कोन सिक्रेशन करନ୍ତି? heparin serotonin and histamine। these are the different enzymes they will be secreted in our body। एई जो हमर mast cell जा कोन करନ୍ତି विभिन्न प्रकार एंजाइम्स जा हम देहर बॉडी रो एंजाइम जा सिक्रेशन करिवार सहाय्य करନ୍ତି। से सब एंजाइम जा खला हेपारिन सेरोटोनिन histamine ए सब जा खला। these are the different type of enzymes which will be helpful by the secretion of the mast cell in our body। next one asla the B lymphocyte are less in number and carries antibodies। it asla lymphoid or lymphocytes asla ए जो lymphocytes मध्ये different types of अछि ए जो types मानक बदरु गोटा असला हमर B lymphocytes हला। तो ए जो lymphocytic cells थिला ना पहिले जो चारि प्रकार रो तार जो गोटे cells माने जो lymphocytes मध्ये different types अछि तो मैं एते माने डिस्क्राइब करूनी तुम जति जानिवा कथा सेति तो lymphocytes तो तार जो हमर जो अछि B lymphocyte अछि सेल ता one type of cell of the lymphocyte। the B lymphocytes are less in number। एमानकर मात्रा ए जो सेल रे के कम जनरली less in number and carries antibody। एवं एमाने कोन करंती हम देहरे एंटीबॉडी कैरी करिवा सहाय्य करंती। सर एंटीबॉडी माने कोन? एंटीबॉडी माने म तुमको ऑलरेडी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस रे कहउथली जदी किछि डिफरेंट एंटीजन हम देह का आसेन माने छाड़ो डिफरेंट पैथोजन जतो कि हम देहर पसि जानती माने जो बैक्टीरिया भाइरस फंगस प्रोटोजोआ जो माने कि हम डिजीज करंती तांको एग्नेस्ट रे फाइट करिया गोटे सिंपल मोड एग्जांपल दोछि तुम अर्थ हे जो एबे मन कर गोटे पिला इफ ए पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड गोटे पिलाटा कॉमन कोल्ड रे सफरिंग हिज एंड दे डिड नॉट टेक एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। से किछ मेडिसिन नलानी और दे डू नॉट डू द एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बट आफ्टर 3 to 4 days इट विल बी क्योर आउट फ्रॉम देयर बॉडी। ता बॉडी देहरु सेटा छाडी जाउची हो छाड़ मनीष तो सेति पय बोली कि हमें जाउचे हम पय मेडिसिन अछि हमें खाइ दुचे। मन कर थिंक अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स like pet animals or domestic animals, they are also suffering from this some disease but this disease we can if we cannot treatment them these disease are also curable from their body। आमे जदि सेमानु ट्रीटमेंट न कले मध्य सेटा तांको देहर छाडी जाउची तो किमिति ऑटोमेटिक छाडुची जेहेतु आम देहरे ता विरोध रे माने ताको प्रतिरोध करिवा पय आम देहरे शक्ति रहिची प्रतिरोधक शक्ति जोटा हमर प्रोड्यूस करचे एंटीबॉडी एई जाका हमर ब्लड रे थाए। तो जतला हम कनेक्टिव टिश्यू रो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को जिबा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू
टिश्यू समय हमें ब्लड डिस्कशन करवा से समय तुम मु पूरा डिस्क्राइब कर देबी व्हाट इज एंटीबॉडी एंटीजेन कोन ए सब जा डिस्कशन करवा बट एबे खाली जानथो एंटीबॉडी माने एटा हला पैथोजेन माने हम देह को जो आसीबे तांको एग्नेस्ट रेजिस्टेंस पावर बा तांको किल करिया पई बोली कि जो जिंसडा हम देह रे रही अछि बा हम ब्लड रही अछि सेटा हमें एंटीबॉडी बोली कहते तो कौन कहला द बी लिम्फोसाइट्स आर लेस इन नंबर एमानकर संख्या बहुत कम एंड दे कैरी एंटीबॉडी एवं एमाने कौन कैरी करंती एंटीबॉडी से माने कैरी करी रखि थांती तापर नेक्स्ट आसला तो दीज आर ऑल अबाउट योर एरियोलार टिश्यू एंड ए सब जा जानले हमें अबाउट द एरियोलार टिश्यू एबे देखिया हमें ऑकरेंस ऑफ द एरियोलार टिश्यूटा को जगह रे हमर देखा जाय they are found in subcutaneous tissue sir what do you mean by subcutaneous root जेतो तुम पढिबो subcutaneous माने जद मु ओडिया रे कहि दोछि हमर स्किन रो तळ भाग हला ने अंडर द स्किन बोल लिखि दियो नहले subcutaneous माने एडार मीनिंग हला अंडर द स्किन रो तळ भाग हला स्किन रो तळे हला तो दीज आर द सबक्यूटानियस टिश्यू माने हमर जतो स्किन डाम बाहर कर दवा स्किन रो तळे जो लेयर रहला सेडा हमें सबक्यूटानियस टिश्यू बोली कहते तो ए माने सेही जगह रे मेनली देखांती दीज आर फाउंड इन द सबक्यूटानियस टिश्यू एंड कवरिंग अराउंड द डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स एवं ए माने कोन करंती विभिन्न प्रकार विसरल ऑर्गन्स मानको जो जाके इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट किडनी लिवर लंग्स ए सब जाको हमर पैनक्रियाज ए सब जाको माने कवर करके समान आउटसाइड रे माने कवर करेंगे मध्य माने जोटा कि समान कवर करिति से जो लेयर टाको हमें एरियोलार टिश्यू बोलिबा हमें कहि परिबा तो कोन कहला व्हाट इज द ऑकरेंस को जगह रे मान देखा जानती दे आर मेनली फाउंड इन द सबक्यूटानियस टिश्यू एंड कवरिंग अराउंड द डिफरेंट विसरल ऑर्गन एवं डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स मानको ये कोन करछि कवरिंग कर रखिबारे सहाय्य करूछि नेक्स्ट आसला स्ट्रक्चर तो देखो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द एरियोलार टिश्यू हियर द सेल्स आर स्कैटर्ड देखि पातो सेल्स आ कोन होचंदी रैंडमली मन इच्छा मूव कर रखिसंती तो दी जो सेल्स मानक भितरे जो गैप ता जे फिल अप करूची तक हमें कोन बोली कहचे पैकिंग मटेरियल और द मैट्रिक्स बोली कहचे तो दीज आर द मैट्रिक्स ऑफ टेन जो जाके हमर सेल टा को पैक करि रखिबारे सहाय्य करूचंती दीज आर द इलास्टिक फाइबर्स इज थ्रेड लाइक फाइबर्स कहली मु is a two type of fiber white collagen fiber vello elastic fiber so it is the one type of vello elastic fibers रहिला नेक्स्ट आसला lymphoid cell देखो एटा होचे हमर lymphoid cell तुम जोडा पढिलो lymphoid cell बा जोडा कि हमर बी lymphocytes जाक जोडा अछि these are the lymphoid cells हला ने नेक्स्ट आसला तुमर कोन mast cell the outer surface is rough and they are small is outer surface ता माने कोन अछि rough हेक रही अछि that means एमानर outer surface टी खदरा खदरा हेक रही अछि हला ने तो एई जा खला mast cell this is the matrix this is the exact structure of the areolar tissue एटा होचे तमर structure of the areolar tissue तो पिले आमे गोटे गोटे आमे आराम से देखि देखि जीवा हला ने किछि व्यस्त होबा दरकार नै आराम से सो जिंसोटा को तमे नोट बनै दियो पढो भल से हला ने जो जिंसरा बुझि पानो मते मते कांटेक्ट तमे करि परिबो हला तो एई सब हला हमर कोन दिस एरियोलार टिश्यू उपरे हला ने कोठी देखा जाउची कोभळिया देखा जाउची ता देहरे कोन कंपोजिशन अछि तार स्ट्रक्चर कोभळिया को जगह ऑकरेंस दिस इज ऑल अबाउट योर एरियोलार टिश्यू नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द another part of the connective tissue proper that is the adipose tissue next class में हमें adipose tissue ऊपर हमें डिस्कशन करिवे ओके थैंक यू